Good morning, student. I am Pratyush Kumar Acharya. I'll discuss about scalar and vector, and this is my second lecture. Already I have discussed the introductory part of scalar and vector. So in that topic, I'll discuss what do you mean by scalar, what do you mean by vector. Again, I repeat that one. Scalar means it is a one type of quantity whose magnitude is there, but there is no direction. That means scalar quantity are those quantity which have magnitude but no direction. So that scalar quantity can be represented by a physical quantity, and it also represent by a numerical value and units like as a mass, length, okay, energy, volume, clear, etc. These are represented as a scalar quantity. But in our daily life, only magnitude it could not be considered. We have to need a direction, so that we have considered a quantity that is called vector quantity. So vector quantity is like as a physical quantity which have magnitude as well as direction, clear. But scalar quantity which have only magnitude but no direction, but it satisfy law of algebraic addition, like as 1 plus 2, 1 kg of mass, 2 kg of mass, they are added algebraically, like as 1 plus 2, that is 3 kg of mass, 1 meter plus 3 meter, like as a 4 meter length. So they are added algebraically. But in that vector quantity, we could not represent in algebraic addition. Okay, so vector quantity are those quantity which have magnitude as well as direction, and it also satisfy law of vector addition. Law of vector addition means what? Already I have discussed this one. So in that type of physical quantity, they need numerical value, clear, as well as unit, as well as direction. Okay, so there are several physical quantities are there, like as force, momentum, velocity, displacement, acceleration, retardation. These are these quantity. They represent magnitude as well as direction, clear. So overall I have already discussed this one, clear. Now in my topic, in my second class, I'll discuss about representation of a vector. So a vector can be represented by a straight line, and an arrowhead put on it. So what is the meaning of that? That means a vector can be represented by a straight line. So this is the straight line and an arrowhead put on it. So agar would kon lageda am arrowhead lageda. So that represent as a vector, clear. So that is the length of the straight line and this is the arrow. So that length of the straight line represents its magnitude. कौन बुझेबो? परिमाण को बुझेबो. ये जिते लेंथ बढ़िबो सेते तार परिमाण बढ़िबो. Suppose 5 meter. So this is the magnitude. So the length shows that its magnitude and that arrow shows that its direction. Clear play? So a vector can be represented by a straight line and an arrowhead put on it. That means
So if you represent as a vector, so at first we represent a straight line. So this is the straight line and an arrowhead which is put on it. So that straight line, the length of the straight line shows that magnitude and that arrow shows that its direction. Are you getting my point? Clear? So a vector can be represented by a single letter by a single letter and on it with arrow on it. Clear? So for example, if you represent a vector can be represented by a single letter. So if you represent that is the force, so this is the single letter. So if you remove all this quantity, so F is a single letter with an arrow. So that is F is a vector quantity. So F vector we can represent, we can say that this is the F vector. Clear? Okay, Billy? Now I will discuss about direction. Suppose I am a person, I am standing here. So I raise my hands in that direction. So that hand shows that west, that hand shows that east, and my head shows that north, and leg shows that south. So in that way we can draw a figure. So this is east, this is west, this is north, and this is south. Now I will find out direction. If a person traveling along east direction, after that it rotates its direction along the direction of north, like that. Okay, so we can joint from the origin point that shows its direction. So already I have discussed there is a minimum displacement traveled by a body. That displacement we have to consider like as a vector quantity, because displacement is a vector quantity. So in that way we can consider, suppose the person traveling along in that direction, after that it rotates along the direction of north. Okay, so that person created an angle 45 degree to the reference point. So this is the reference point. Clear? So that direction which is represent in between two poles, that is east side and north side, that direction which is lies in between both east side and north side, so that can be represented in the form of northeast direction. What? Northeast direction. तार तो कौन आमे मानिबा जदि आमे गोटे पार्टिकुलर लोकर से को जगार स्टार्ट कर तार मोशन को जगार पहुँचुची, तो से जगार तार ओरिजिन जाए, ओरिजिन मीन दिस वन और रेफरेंस पॉइंट, जो स्ट्रेट लाइन टा जदि आमे कंसीडर करिबा ताको कहबा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस.
से सब वेक्टर जो रिप्रेजेंट करबा तार डायरेक्शन सब हम शॉर्टेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करबा तो से शॉर्टेज डिस्टेंस पई आमे कोन करबा ताको एंगल नोटिफाई करबा सपोज जने पर्सन ईस्ट गला अगेन रोटेट हला नॉर्थ आड़ को ताले जो स्टार्टिंग पॉइंट रो भाला इनिशियल पॉइंट रो तो फाइनल पॉइंट रे पहुंचबा जो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर कला सी प्रथम जो एक्सिस सहित से ट्रैवल करी जाइतला से कोन कला केते मिनिमम एंगल कंसीडर कला सपोज आमे भाबी दवा 45 डिग्री कंसीडर कला सो आमे जदी कहिबा कि को डायरेक्शन रे मोशन करछि से ट्रैवलर बा पर्सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रे मोशन करछि सिमिलरली जने जदी 45 डिग्री एंगल रे जाउछ ए डायरेक्शन रे आकु कहिबा जदी आ सहित ये 45 डिग्री कला सपोज गोटे पर्सन 45 डिग्री वेस्ट गला अगेन ट्रैवल कला नॉर्थ आड़ को आको कहबा नॉर्थ ऑफ वेस्ट सपोज यदि पर्सन साउथ रो गला साउथ आड़ गला अगेन ट्रैवल कला वेस्ट आड़ को केते डिग्री जदि रेफरेंस पॉइंट रो से जदि ट्रैवल कला 45 डिग्री एंगल मूवमेंट कला ताहले आको कहबा वेस्ट ऑफ साउथ जदि हमें ए डायरेक्शन कैलकुलेट करबा तो क्वाडे गला साउथ आड़े गला अगेन से वेस्ट आड़ मूव होला तो हम लिखिबा वेस्ट ऑफ साउथ ओके सिमिलरली जदि गोटे पर्सन ईस्ट टू गला अगेन ईस्ट टू गला अगेन से साउथ आड़ को मूवमेंट होला केते एंगल कला 45 डिग्री एंगल कला ओरिजिन सहित तो आको कहबा कोन व्हाट आको हम जदि हम कहबा साउथ ऑफ ईस्ट क्लियर इले सो जदि हम प्रत्येक लोकर डायरेक्शन जानिबा को चाहिबा ताहले हम शॉर्टेज डिस्टेंस को देखिबा जो पॉइंट रो बाहर छि से केते एंगल रे रोटेट करूछि प्रथमे को डायरेक्शन गला तापर को डायरेक्शन मूवमेंट कला ताहले से जो फाइनल पॉइंट रो इनिशियल पॉइंट को जॉइन करबा से केते एंगल रोटेट कला से जो एंगल रोटेट करिया जोगु हमें देखिबा से नॉर्थ ईस्ट रे जदि जाइछि ईस्ट रो बाहरला ईस्ट आड़ गला अगेन नॉर्थ आड़ गला ताक कहबा नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोले कहबा सेमिति नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोले कहबा ओके वेस्ट ऑफ साउथ बोली कहबा साउथ ऑफ ईस्ट बोली कहबा चलो मु तुम किछि प्रॉब्लम दउछि तुम किछि करो ओके सो तुम जदि पचारा गला थर्टी डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट आकु तमे केमिति नोटिफाई करिवो वेक्टरिकली सपोज दिस इज द ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ कहला 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट तो प्रथमे हम कोन करिबा वेस्ट को ट्रैवल करिबा ओके तापरे क्वाड मूवमेंट करिबा साउथ आड़ को मूवमेंट करिबा ओके ताहले रेफरेंस पॉइंट रू 30 डिग्री हम नबा ओके कागा मध्य रहबो रेफरेंस पॉइंट रू जो वेक्टर हमें डायरेक्शन देखैबा वेस्ट और साउथ मध्य रहबो सो 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट तार अर्थ कोन आसला वेस्ट रू से 30 डिग्री रोटेट हला तो क्वाडे गला दैट इज 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट क्लियर सिमिलरली तुमको है इट कहबो a person traveling with its velocity 2 meter per second second number question 2 meter per second and it moves 70 degree east of north clear how to define okay suppose in that case that is second number so this is east north west south
This is the very important for your exam in second year, clear, or in first year, or in JEE examination, clear. So in that case, here we consider 2 meter per second. केते मीटर पर जाउची वेलोसिटी रे 2 मीटर पर सेकंड जाउची ईस्ट नॉर्थ जाउची. सो हमें कंसीडर कर दबा दैट इज ईस्ट नॉर्थ. ओके 70 डिग्री. ओके केते डिग्री कहउची 70 डिग्री. 2 मीटर पर सेकंड जाउची. अर्थ कोन देखो केते जाउची आरो डायरेक्शन आरो लेंथ हला केते 2 मीटर पर सेकंड लेंथ दैट इज द मैग्नीट्यूड कोइची. ओके एंड एडी कहला ईस्ट ऑफ नॉर्थ केते डिग्री 70 डिग्री. तार अर्थ नॉर्थ गला अगेन से रोटेट हला 70 डिग्री कोडे ईस्ट आड़ को. सो ए डायरेक्शन रे रोटेट हला तेणु आको कहबा 70 डिग्री और लिखि परिबा the person traveling in 2 meter per second 70 degree east of north. Clear? Clear पिले तार तो कौन हला ए ओरिजिन रु बाहरला से नॉर्थ रु 70 डिग्री रोटेट करिकी नॉर्थ ईस्ट रे गला बा ईस्ट नॉर्थ रे गला हला. तेणु आकु लेखा गला कौन लेखा गला 2 meter per second हला. The person traveling with 2 meter per second and rotate 70 degree east of north. North रु से केते डिग्री कला 70 डिग्री कला. क्लियर? ईस्ट ऑफ नॉर्थ. सो नॉर्थ रु से 70 डिग्री ईस्ट आड़ को गला. ओके पिले नॉर्थ रु 70 डिग्री ईस्ट आड़ को गला. पूर्व कोन थिला साउथ ऑफ वेस्ट. वेस्ट रु 30 डिग्री साउथ आड़ को गला लाइक दैट. ओके हम किछ लिखिने. क्लियर? दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट डायरेक्शन. ओके ए जो डायरेक्शन तमे कंसीडर करलो ए डायरेक्शन दा विभिन्न जगह में यूज करि परिबा जेतोळे हम प्रॉब्लम फेस करिबा. ओके सो सेथि पय मु आगुर जणाई देली. ओके पिले सो एबे पढिबा किछि इंपोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर. सो जदि गोटे वेक्टर एटा जदि हम गोटे वेक्टर कंसीडर करिबा ए वेक्टर को हमें कोन करिबा रोटेट करिबा कोन हिसाब रे. सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मींस घंटा घंटा जो पोटे डायरेक्शन बुलछ ताको आज क्लॉकवाइज. घंटा घंटा रे ऑपोजिट डायरेक्शन हमें काउंट करिया ताको आज एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज बोली कहबा. सपोज दिस इज द वेक्टर दैट रोटेट 360 डिग्री. केते डिग्री 360 डिग्री. ओके ऑन रोटेटिंग द वेक्टर by 2 pi केते 2 pi रोटेट करिबा. सपोज ए वेक्टर को मु कोन करले 2 pi रोटेट करी बडे 2 pi. दिस इज द 2 pi रोटेट करले ताहाले हमें पाइबा से वेक्टर रो डायरेक्शन कोड आबो बिफोर जो डायरेक्शन थिला से डायरेक्शन रे ही नोटिफाई हबो. ओके पिले बुझबा छ बा 2 pi माने केते 360 डिग्री. पाई हला 180 डिग्री. 2 pi रेडियन बोली कहबा ताको डिग्री कोन करले करे ताको हमें 360 डिग्री बोली कहबा. जदि गोटे वेक्टर गोटे पार्टिकुलर डायरेक्शन थाए ताको जदि हम रोटेट करबा 2 pi रेडियन रे बा 180 डिग्री रे एबा सॉरी 360 डिग्री रे देन वेक्टर जो डायरेक्शन रे पूर्व थिला सी डायरेक्शन रे ही पाइबा. अर्थ देयर इज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. देयर इज नो चेंज of direction. There is no change of direction. Okay. Then asila parallel shifting of a vector. Parallel shifting of a vector. This is the main important points which are related to vector. Okay, parallel shifting माने कौन? Suppose this is the axis. Okay, if you consider a vector which is like in that direction. Okay, play. If you imagine this is the line where
the vector create an angle through that component. If you represent, that is the component. Okay, so this is the vector which is lying in inclinely direction. Incline means तेरछा भाबे अछि. जदि हम गोटे एटा वेक्टर कंसीडर करिबा ये को डायरेक्शन रे तेरछा भाबे अछि हला. तो सेति पई मे वेक्टर को दीटा भाग रे रिप्रेजेंट करली. गोटे हला गोटे एक्सियल लाइन रे एक्स एक्सिस रे आ गोटे को वाई एक्सिस रे रिप्रेजेंट करली. तो ए वेक्टर को हमें इजीली कौन करि परिबा शिफ्टेड करि परिबा. तो देखो आको ए वेक्टर को ए डायरेक्शन में शिफ्ट कर परिबे. दैट इज द शिफ्ट ऑफ वेक्टर, दैट इज द पैरेलल शिफ्ट. सो ए लाइन थिला जहा ए लाइन अछि तहा. सो ए वेक्टर को एटी कैन देली. सो जदि तुम प्रॉब्लम रे आसीबो एमिति गोटे जिंस दबो गोटे वेक्टर रिप्रेजेंट करिवो ताको तमे इजीली मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दवा पाए ताको पैरेलल शिफ्ट भी कर परिबो. सो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, वी कैन represent a vector in the form of parallel shifting. So a vector is lying in there. Now that vector which is represent in that way. So this is the correct. Okay. So there is a parallel shifting of a vector. Clear? So that is the 30 degree. Suppose this is the 30 degree. Clear? That is the parallel shifting of a vector. Please note it. So this is called parallel shifting. Now I will erase that one. Now my third point is, these are the 2 points which are erased, and this is my third point which is related to vector. If two vectors are joined together and they create always a smaller angle. तो लिखिबा two vector always create a smaller angle. Clear? Smaller angle means, that means 0, that is theta less than 0, that is 180 degree. That's the the angle theta which could not be less than 0 or more than 180. Okay, ताहले हमें के भेले ताको रिप्रेजेंट करि परिबानी. तो this is the point. Two vector always create a smaller angle. That means the angle between two vector should be less than. That means it lies between 0 to 180 degree. It could not be less than 0 degree or more than 180 degree. तार अर्थ 0 ठारू कमी गले हबनी किबा बढ़ी गले भी हबनी. हमें सब बड़े कंसीडर करिबा कोन, the two vector always create a smaller angle. Now second point is, and two vector whose tails are connected. At that case, we consider the smaller angle. So, two vector whose tails are connected at a particular point, so that we calculated, so that there is a minimum angle between two vector. कौन प्रथम तो two vector always create a smaller angle, and there is a smaller angle between
angle between two vector. Tartha two vector tails are connected at a particular point. Whose Tartha suppose this is a vector, okay, and when the straight line originates, that origin behaves as a tail point of that vector, and an arrowhead put on other end of the straight line that behaves as a head point. Clear? So again I repeat, those vector which are originate from a particular point, or those straight line originate from a particular point, that point behaves as a tail point, and an arrow which is put on the other end of the straight line, that is called head point. So at that case, two vector whose tails are connected at a particular point, so this is one vector and this is another vector. So this is two tails. So that vector whose tail is this and that vector whose tail is this. So two tails are connected at a particular points. So they create a smaller angle. Okay. So this is the very important point whenever we consider some problem. Okay, this is the very important point when I will discuss about some problem. Okay. Suppose मते कहले पिले आमे जदि दीटा वेक्टर कंसीडर करिबा, सपोज दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ए वेक्टर रो को एंगल को आमे साधारणतः कंसीडर करिबा, ए बिगर एंगल को ना स्मॉलर एंगल को. तो ए पॉइंट अनुसार जेतोला आमे वेक्टर पाठ पढुचे तो सबोले आमे कोन करिबा, स्मॉलर एंगल को कैलकुलेट करिबा. जत्ते बेले जो दीटा गोटे पॉइंट, जो पॉइंट रे की दीटा वेक्टर रो टेल जेतोल जॉइन करंती, तो सेमानंकर जो स्मॉलर एंगल जनरेट हुए, सेमानंक द्वारा जो स्मॉलर एंगल जनरेट हुए ताकू आमे सबोले कैलकुलेट करिबा. ओके. तमु जदि पचरे दला ए जिंसडा ला 300 डिग्री, ए जिंस को आमे केबेल कैलकुलेट कर परिबा. आउ जो बळका जिंस रहला 60 डिग्री, that behaves as a smaller angle. Okay. So in that way we have to consider the smaller angle when two vector always joins at a particular point by using their tail. टेल को धरिकी से माने जो एंगल क्रिएट करंती टू वेक्टर से एंगल को एज ए स्मॉलर एंगल आमे सब बळे कंसीडर करिया स्मॉलर एंगल को. ओके. सो दिस इज ओवरऑल डिस्कशन ऑफ representation of vector and with some problem and very important point which are related to vector. Okay. In lecture number 3 I'll discuss about some problems about that important point which are related to vector, and also I'll discuss about some important thing which are using in vector. There are number of vector which are vector that becomes discussed in later class. Clear? Thank you.